what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just Guys, this is Hina Reja. Welcome back to my channel. And as you can see behind me is Church Street First, which apparently is India's first walking street in Bangalore. We are about to reach and सबसे पहले जाके पार्किंग ढूंढेंगे. लेकिन पार्किंग का थोड़ा सा इशू है, तो देयर इज़ दिस राज डायमंड्स के नीचे ही पार्किंग. तो अगर आपको यहाँ डायमंड खरीदने जाना है तो आपको पार्किंग के पैसे नहीं देने, लेकिन हमें डायमंड नहीं चाहिए लाइफ में, तो हम पार्किंग के पैसे देंगे. सो इट्स लाइक फाइंडिंग अ गुड स्पॉट फॉर पार्किंग विच इज़ मच इम्पॉर्टेंट. हमने पार्किंग की यहाँ MG रोड मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल यहाँ साइड में. देन यू हैव टू टेक स्ट्रेट एंड फर्स्ट राइट फ्रॉम हियर टू रीच द चर्च स्ट्रीट मार्केट. एज यू कैन सी, तो ये वाली रोड यहाँ से पूरी ब्लॉक की हुई है एंड दिस इज़ द वॉकिंग स्ट्रीट. That's something actually very interesting. You can get power bank from here if you total free. We provide 6 months free. 6 minutes free. 6 month. 6 month free. Oh, okay, okay. Yeah. You have to take it. You have to do sign up and put it back there. And we have across India 10,000 outlets. All metros, airports, and CCDs, Burger King, Cake and Innovation, Cake Celebration. All the places we have. Just open your app and you make use of the technology. I am Purushottam. I am from Spike Innovations. Okay. Thank you. Thank you. बनाए तो जो बॉल पेन से बनाया है, ऐसा कुछ डिटेल्स है. कौन सा बॉल पेन से बनाया? बॉल पेन से बनाया है, वो भी बॉल पेन से ही बनाया है. अरे वाह. और ये नियॉन कलर से डार्क में ग्लो आपने बनाया ये? ओह, शक्ल तो दिखाओ आप अपनी फिर. ओके. ओके. वेरी नाइस. रात में आपको ग्लो होएगा ऐसा कुछ. अच्छा. ये ग्लो इन डार्क लाइक. और थोड़ा बहुत जो टू व्यू आर्ट वर्क का, ये जो नया आर्ट वर्क बनाया है मैंने एक्चुअली, ये टू व्यू आर्ट वर्क है. ओके. ये ताइवान से ऑर्डर आया था मेरे को, तो मेरा आइडिया और कॉन्सेप्ट उनको प्रेजेंट किया था, तो उनको पसंद आया तो मैं बना के दिया उनको. जैसे मॉम एंड डॉटर लाइक कॉन्सेप्ट. Got it. One painting and 2 lines. So they gave us this. Let's open and check what is there. Which that's how they were actually dressed. I don't really understand the purpose of this. So guys, यहाँ कुछ भी ले लो tops. This is for 250 rupees. ये bikes यहाँ rent पर मिल रही हैं. So there is this open area sitting for having food. Pick any for 100 rupees. What do you say guys? कुछ लेना चाहिए यहाँ पे? कुछ भी लो 200 का. Then they have small तांबे की चीज़ें. Oh, they have these old coins also. ये कितने के हैं? अलग अलग. ये कितने का है? हाँ, 200 रुपये का. ये कहाँ का है? There they have these old coins जो ये 200-300 रुपये टाइप्स के हैं. 3400 प्योर ब्रास हैवी है. ये सब ब्रास के आइटम्स हैं इनके पास. क्रोकोडाइल कितना प्यारा लग रहा है. ये कितने का है भैया? 150. 1 आना 18. I'm from the NGO that's here. Would you like me to explain what's about? Sure. Okay, so we fight for clean air. Okay. We do this by asking the government by creating a case with the 2 campaigns there right now. I'll explain that. But these lungs are breathing. They were white 3 months ago.
and they've been absorbing air because there's a fan in the back, you'll see. And that's what pollution over 3 months on the roadside looks like. Oh, is it for real? Like they were white when you It was installed white them? 3 months back, Ah. and now it's dark grey. And every week it's darker and darker and darker. So there are multiple points from where you can rent a bike to roam inside the market. These are really cool bikes. Definitely rent one if you plan to come here. Oh, look at that dog. Is he for real? They have all these cute handmade things. These wallets are for 200 and stalls for like 250. This is again for like 100, 200 and 300. Price varies. Here they have these bags. At a lot of places you will see this, like take what you like, pay what you like. There are a lot of eateries here on the street. This is one cute restaurant, then there is that pizza house. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Also get plants. That's a very pretty different kind of jewelry. And I guess ये clay पता नहीं किसी और metal की बनाई हुई है इन्होंने. Can you see that? ये doggy का अलग ही show चल रहा है यहाँ पे, अलग ही. The more you go inside the street, you will find more art. We have reached to the end of the street, so this is like a straight road where there are no vehicles allowed on weekends. Means Saturday and Sunday only, and weekdays if you come to this market, this will be all, you know, covered with cars. But as you can see now, तो वहाँ पर and in the beginning of the street it is all closed. मेरे पीछे if you see, so there are multiple artists selling their art, and so they have particularly mentioned that pick what you like, pay what you like. यहाँ पर आपको इतने artists मिलेंगे, it means उतने ही type की arts आपको purchase करने को मिलेंगे. So that's a very good point for art house. I just got a rose from the teddy bear. Oh, there is a shop for shawls and fulkaris and all. Again, a very beautiful art shop. हम लोग भी लखनऊ में रहने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे जॉब करते हैं. अच्छा. ड्रम सेल करते हैं हम लोग से. ये सेल करते हो? कोई शॉप है आपकी? नहीं, शॉप नहीं मैडम, ऐसे वर्किंग. ऐसे ही सेल करते हो? इफ़ यू सी, तो यहाँ पर आपको काफ़ी यूरोपियन मार्केट्स वाली फील आएगी, लाइक दुबई, लंदन, पेरिस टाइप जगहों पर ऐसी स्ट्रीट्स काफ़ी होती हैं जहाँ पर लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, फ्रीली घूम रहे होते हैं. सो दैट्स वन ऑफ इट्स काइंड. सबसे बड़ी एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट दिस मार्केट विल बी देयर ओनली टिल 28th of February. आई एम ईटिंग एट दिस बिगीज बर्गर एंड आई हैव ऑर्डर्ड पेरी पेरी पनीर एंड लाइम एंड मिंट. आता है तो देखते हैं टेस्ट कैसा है. Done with the food. Now I'm going to get few sweets back for Anurag and Nazia. Well, that is all for this video. Again, I'm saying that if you are in Bangalore till 28th Feb, if you are watching this video, then definitely visit this place on my recommendation. This place is perfect for group of friends and couples, and actually for everyone. It's 8:15 and this time the thing is कि जितने भी food points हैं वो सब भर चुके हैं, and all the artists here they are packing up. यहाँ मुझे अदरक वाली चाय मिल गई तो I just couldn't let it go. और इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं. अगर तुम्हें व्लॉग पसंद आया तो you know what to do. वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ तुम्हें कैसा लगा, और बाय एनी चांस तुम अगर इस मार्केट में होकर जाते हो तो मुझे ज़रूर बताना. एंड सब्सक्राइब करो यार. आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट व्लॉग. Cheers. So yeah, that's all. I'm done with Church Street first, and if you see तो इस रोड पर जाम तुम देख सकते हो किस लेवल का है. Living life, every day, late at night, not okay. All I want,
and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you